with the last part of this chapter, beta, we have to discuss about water and then we'll move on to the past paper questions. So our learning objectives for this are explain how hydrogen bonding occurs when water molecules between water molecules, and we have to relate the properties of water and its roles to the living organisms, and it has to be limited to solvent action, specific heat capacity, and latent heat of vaporization. Right? So these are the objectives. Let's move on to the slide now. Okay, so let's begin. Okay, so water, beta, is the like most abundant solvent on earth, right? And like if you talk about human body or okay, so we have around 70 to 95% of us is water, right? So here they've shown you certain pictures of earth, water is making around 70%. Okay, then if you're talking about ocean water, it's 97%, and out of that only 3% is fresh water, 70% is in glaciers, 29% is underground, and rivers and lakes make less than 1%. So this is just how like we have like this much water there. Okay then. Now this is important. It's structure of water beta. Now let's talk about the structure of water molecules. So water is a polar molecule. So you can see there are covalent bonds made between hydrogen atoms and oxygen. So we have two hydrogen atoms and we have one oxygen atom there, right? So it's H2O. So what happens is oxygen, this end here is actually partially negative. So it gets a slightly more negative charge, and this end here is partially positive, right? So these charges are not actually equally distributed there. So oxygen end is partially negative and this is partially positive. So because of that, what happens, water, if we have more water molecules, this is water is found in clusters form. So hydrogen bonding actually forms, hydrogen bonds form between the water molecules, and it makes it difficult for the water molecules to separate. So what is happening here, they have shown you one water molecule, and see, this is oxygen, which is negatively, which has partially negative, and this is hydrogen, which is partially positive. So they will be attracted to each other, right? The same you can see here, oxygen partially negative, hydrogen partially positive. So these bonds that are being made is known as hydrogen bonds. And since water molecules, they are in clusters, so a lot of these would make hydrogen bonds with each other, right? So this is how the structure of water molecule is known as, or water is actually known as a polar molecule, right? Now, water ki beta, this is what you have to remember. Water acts as a good solvent. So uska basic reason kya hai beta? Since beta water, remember, because of this polarity, it's slightly negative here and it is slightly positive at these ends. So ionic compounds like sodium chloride can dissolve very easily in water. The reason is beta sodium chloride, so sodium is a cation, when it dissolves in water, it dissociates, and chloride is a negative. So what will happen, if it is a positively charged sodium ion beta, so these negatively charged, these oxygen, these dipole, the negative charge will be attracted towards, look at the positioning. Okay, so this is how water, we say water is attracted towards the polar molecules, right? So this negative charge is being attracted towards a positive one. And if you look at chloride, the negative charge, so let's see, look at this of hydrogen, the delta positive charges are attracted towards it. Okay, so water, according to the situation, it will make bonds there. Okay, so here you can see, that's why what is considered as a good solvent. Is it clear now? So it's a hydrated sodium ion, it's a hydrated chlorine ion. Is it clear, according to the positioning? Okay then. Yes. Okay. Second quality water ki kya hai bete? Protein molecules form colloidal solutions with water. Colloidal ka matlab bete, they actually become like such small fine bilkul uske particles hote, but फिर भी they are not dissolved in water. So यहाँ जो second picture आपको नजर आ रही है, this one, they have shown you colloidal solution. True solution में बेटे complete dissolve हो जाता है solute, ठीक है? Colloidal में, ठीक है, there is no complete solution, but फिर भी बहुत fine small even particles, like you can actually better when it dissolves. So generally protein actually dissolves like this in water. Okay, suspensions, you will be able to see these large particles in suspension. So protein molecules, they form colloidal solutions with water. Okay, for example, egg white जो है बेटा, so it's 85% water and 15% albumin. So albumin का जो part है, that is protein, and it is 85% water. Cytoplasm has 80% water. Okay, so these colloidal substances, they are there. Okay, completely dissolved नहीं होते. Then fats and oils also do not dissolve in water, right? So we know about this bit. Okay, so these are the hydrophobic properties
of fats, ठीक है? So they form emulsions with water in the presence of bases. ठीक है बेटे? Is it clear till here? Okay. Now this is important. ठीक है? You can be asked about the heat qualities of water. So we'll be talking about the specific heat and latent heat. So what is happening बेटा? देखो, this is 0 degree Celsius is the melting point, ठीक है? Of water, and 100 degree Celsius is the boiling point. ठीक है? Below 0 degree Celsius is the melting. ठीक है? So if you are heating, ठीक है, for example ice, ठीक है, तो जो बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बहुत सारे बने हुए थे, उनको ब्रेक करने के लिए a lot of energy is required. ठीक है? So a lot of energy is required from melting point to from like melting temperature or freezing temperature, sorry, to reach this melting. ठीक है? और phase change होने में we have this much time. ठीक है? It takes this much time to change the phase from ice to water. And then if you are converting that water into steam, okay, that will take from 0 till 100 degrees Celsius. So it takes a lot of heat energy to break these water bonds. ठीक है? तो इसलिए specific heat capacity water की बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है? तो यहाँ they have shown you heat energy which is added at a constant rate. And then again once you have actually converted into steam, ठीक है, अब वो जब boil हो गया बेटे, तो again उसकी phase change होने में, अब वो water से gas convert होने में, ठीक है, it will take a lot of energy there. So water के लिए basically the thing is with melting and boiling points are very high, and the range is from 0 till 100 degrees Celsius. ठीक है? Because of this, the latent heat of fusion of ice is very high. ठीक है? क्योंकि जब water molecules को like combine होने में, जब ice में वो form होते हैं बेटे, heat energy is released. ठीक है? क्योंकि kinetic energy सब उनकी slow हो रही होती है, तो latent heat of fusion of ice is also very high. ठीक है? पानी से बर्फ बनने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है, and then latent heat of vaporization is also very high. ठीक है? सिमिलरली अब वही बॉइलिंग वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट आल्सो टेक्स वेरी, उसे बहुत आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 0 to 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? Therefore water can store a huge amount of heat. So that's the reason it is specific heat capacity of water is very high. ठीक है? And you should know the definition here. ये पेपर में पूछते हैं आपसे. It means the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius. ठीक है? बिकॉज यू कैन हैव, अगर आप ओशंस की बात करो, तो यू कैन हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर देयर. तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एनर्जी और हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? सो दिस इज द रीजन वाटर कैन रिमेन एज लिक्विड विद इन द रेंज ऑफ हाई टेम्परेचर्स. ठीक है? स्टिल रिमेन्स अ लिक्विड. ठीक है? ऑल्सो द चेंज ऑफ टेम्परेचर इन वाटर बॉडी इज ऑलवेज मिनिमाइज. तो जो भी चेंज होती है मोस्टली वो ऊपर की लेयर में हो रही होती है. ठीक है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओशन आल्सो, तो नीचे की लेयर में देयर इज नो चेंज देयर एज सच. इज दिस क्लियर बेटा अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Okay then, and again this example is also asked. ठीक है? So water converts into ice and forms a layer on the surface of water bodies. इसका रीजन ये बेटा, जब वाटर, देखो वाटर इटसेल्फ जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो इट एग्जिस्ट एज क्लस्टर्स. ठीक है? मगर जब वो आइस बनता है बेटा, आइस इज सॉलिड फॉर्म, तब वो क्रिस्टलाइन उसमें स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं. एंड रिमेंबर ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली बेटा कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में बन जाते हैं बेटा, तो इट टेक्स मोर स्पेस देयर. ठीक है? सो व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस बेटे, जो आइस की जो डेंसिटी होती है बेटे, इट इज लोअर देन वाटर देन. ठीक है? बिकॉज इट इज टेकिंग मोर स्पेस देयर नाउ. सो आइस एक्चुअली बेटे देन एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर. क्योंकि आइस की लेयर टॉप में, आइस ऊपर की लेयर ही पानी की जो होती है वो बर्फ बनती है, नीचे स्टिल रिमेन्स वाटर. सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ice actually acts as an insulating layer and it protects the remaining water from getting frozen. ठीक है? And this is what actually helps these fish, ठीक है, or the marine life with it. It actually can survive in the water because of this property. Clear bit? Okay. Then one more important, ठीक है, property, that is surface tension. ठीक है? So water molecules again बेटा, when they present on the surface, they make a water membrane. और हर चीज में बेटा बेसिक रीजन क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है? तो सरफेस पे जितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे. ठीक है? एंड देन कलेक्टिवली उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी. So because of that, the tension of this membrane is known as a surface tension. So some animals, ठीक है, ये एग्जांपल अक्सर आपके पेपर में आती है. ठीक है? वाटर स्ट्राइडर्स की, they can actually बेटा stay on the surface of water. So ये इनका habitat भी है, so they can actually get their food there. ठीक है? Some animals live on the surface. So यहाँ पे आपको एग्जांपल उन्होंने पेपर क्लिप की दिखा दी है. It is floating on water because of surface tension. ठीक है? क्योंकि वो जो बॉन्डिंग की वजह से ऐसी लेयर बन जाती है, तो उसके फिर लाइक डेफिनेटली अगर ये एनिमल भी है तो ये इट इज नॉट ड्राउनिंग. ठीक है? इट इज स्टेइंग ऑन द सरफेस. क्लियर बेटे?
ठीक है, if you look at this Yes, here, miss. they have shown you here also कि ये water molecules आपको दिखाए, and look at बेटा because they make hydrogen bonds, ठीक है, तो एक strong force यहाँ पे बन जाती है, यहाँ पे दिखाई भी उन्होंने. Okay? अच्छा, next comes cohesion and adhesion. कोहेजन होती है बेटा जब वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं. एडहेशन क्या है, जब वही वाटर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टिंग टू द सरफेस. ठीक है, सो दे हैव शोन यू कोहेजन है कि दीज आर टू वाटर मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो बॉन्ड है, अगेन बेटा रिमेंबर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कनेक्ट टू द सरफेस आल्सो, सो तब हम टर्म यूज करते हैं एडहेशन. ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, एंड अगेन रिमेंबर बेटा दीज आर बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. There is a force between water molecules known as cohesion. The force exerted between water and other type of molecules is known as adhesion. Okay, so if it is between water molecules, we use the term cohesion. If it is between water and other surfaces, we call it adhesion. This force is help to conduct water through the capillary tube. So again, बेटे अगर root से ठीक है water को ऊपर travel करना है बेटे towards the stem and then it into the leaf. ठीक है, तो ये is because of this cohesive activity बेटे ये property water can travel up. क्योंकि आपस में वाटर मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, एंड देयर आल्सो कनेक्टिंग टू दिस, ये जो स्टेम है, ठीक है, ये फिलोम के थ्रू अगर वो ऊपर भी जा रहे हैं बेटे और जाइलम के थ्रू ऊपर जा रहे हैं तो दे विल बी कनेक्टेड टू द सरफेसेस आल्सो. सो जो कैपिलरी एक्शन होता है दे आर सक्ड अप इज बिकॉज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी बेटे, कोहेजन एंड एडिशन. सो दे हैव शोन यू हियर आल्सो. ठीक है, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स दे हैव शोन यू ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. ठीक है, सरफेस ऑफ द लीफ पर है दैट इज एडिशन, और ये पूरा ड्रॉपलेट बन रहा है बेटे वाटर मॉलिक्यूल्स का, दैट इज बिकॉज ऑफ कोहेजन. Clear with it? ठीक है. Okay. Then beta another property of water, it acts as a reactant in many metabolic reactions. ठीक है. So photosynthesis, you know beta carbon dioxide plus water. ठीक है. So water is a reactant there in process of photosynthesis. We are getting oxygen and glucose, which are the products. ठीक है. Similarly, जब हम organic chemistry की बात करते हैं, अभी हमने biological molecules की बात की. ठीक है. So like polysaccharides, ठीक है, या large polymers को when we have to break them down बेटा, like ठीक है, they undergo hydrolysis reactions, so water is added. ठीक है, so that polymer या polysaccharide अगर है तो ठीक है, it will break down into monomers there. So यहाँ पे आपको एक उन्होंने एग्जांपल दिखा दिए. ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड we are adding water, तो ये इसके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन गए, सैलिसाइक्लिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. ठीक है, so photosynthesis, hydrolysis reaction में Repeat your audio got cut off. जी, which one did you miss with it? Both, the whole part. अच्छा, see, like can you hear me now? Yeah. अच्छा, where we say water act as a reactant in metabolic reactions. So metabolic reactions, ठीक है, photosynthesis में carbon dioxide plus water, ठीक है, when these two beta react together we get these products oxygen and glucose. So had there been no water, photosynthesis का process ही नहीं हो सकता था because it's one of the reactants there. ठीक है बेटे, so that's why we can say कि water acts as a reactant in the metabolic reaction. और similarly hydrolysis की जब हम बात करें, so बेटा for example there is a polysaccharide, or let's say you have eaten a starch, ठीक है, but your body cannot digest a starch directly, it has to be broken down. ठीक है, so starch has to be broken down into maltose first. ठीक है, फिर maltose has to break down into glucose. तो ये breakdown किसकी वजह से होगा बेटा, we need water for that. ठीक है, starch you are reacting it with water. ठीक है, definitely there will be an enzyme but you are reacting with the water. So hydrolysis reaction होगा बेटा, we will get maltose. Again, if you want to break down maltose into glucose, you are reacting with the water. ठीक है, so water acts as a reactant in metabolic processes. फिर glucose your body will be able to use. Is it clear बेटा? This is a hydrolysis reaction. ठीक है. अच्छा, with that ये water का हमारा topic बेटा is completed. And अब इसकी भी अब animation देख लो, then we are moving on to the past papers now. Are attracted to each other by hydrogen bonds. These exist because part of a water molecule is slightly negatively charged, while another part of it is slightly positively charged. This might sound really trivial, but this little property of water is essential to life as we know it. A water molecule contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. These are covalently bonded together, meaning they share electrons. Oxygen atoms have a larger nucleus with positive protons, and so tend to attract the negative electrons towards them more than hydrogen. The result is that part of the water molecule is slightly negative,
meaning that the other parts are, relatively speaking, more positive. We can say that water is polar. Just like the ends of a magnet or the poles on Earth, water molecules have opposing ends. In the case of water, there is one negative end and two positive ends. Because opposites attract, water molecules are cohesive, meaning they are attracted to each other, held together by what we call hydrogen bonds. You can see this happening wherever you see a small quantity of water. Water molecules have a tendency to clump together into droplets rather than spread evenly over a surface. Even water molecules falling from a tap will group together. The polar nature of water is really important for living organisms for a few reasons. First up, water allows lots of things to dissolve in it. If we take regular table salt, sodium chloride, as an example, and drop it into water, the positive sodium ions separate from the negative chlorine ions. This can happen in water because of the way the positive and negative sides of the water molecules can arrange around the ions. If something can have materials dissolve in it, we call it a solvent, and because of the solvent property of water, it's a great liquid for transport of essential things like ions and glucose around living organisms. An increase in temperature within a material requires the molecules within it to move faster. Because hydrogen bonds take a fairly large amount of energy to break, the molecules don't move around easily. This means that it takes a relatively large amount of energy to change the temperature of water. This is known as the specific heat capacity, and water has a high specific heat capacity. As a result, water habitats like lakes and seas don't change significantly in temperature throughout the year, making them livable habitats in all seasons. For liquids to become gas and evaporate, the molecules need to separate. For water to become a gas and evaporate, hydrogen bonds have to be broken. This takes a lot of energy. Water on skin will evaporate because of the heat energy being released by an organism, and it takes a lot of this energy to make the water turn into a gas. This is known as the heat of vaporization, and we can say that water has a high heat of vaporization. For this reason, sweating is an effective way to remove heat energy from an organism and help it to maintain a constant body temperature. Because hydrogen bonds make water cohesive, meaning the water molecules stick to each other, if you move water molecules, the others around it will be pulled in the same way. This is the reason why water moves up through a plant. Water released by the leaves causes the molecules beneath to move upwards, causing a transpiration pull through the plant. In addition to being cohesive, water molecules are adhesive. This means the molecules can stick to molecules other than water. In the transpiration stream, water can stick to the walls of the xylem vessels which help it to move upwards. Think about a mountain climber. They need to be able to hold onto a cliff face if they want to move up it. The top layer of molecules of water act like a sort of skin, preventing things from breaking in beyond the surface. This is known as surface tension. Think about the molecules in a fluid like the balls in a ball pit. A person who climbs into the ball pit can sink in. If, however, we glue the top layer of balls together, a person that sat on top, assuming they're not heavy enough to break the bonds, would not sink into the ball pit. Hydrogen bonds have a similar effect on water as this glue. Each water molecule is attracted to the others in all directions, but those on the surface have no molecules above to be attracted to. They compensate for this by holding more tightly to the molecules next to them, meaning the top layer of the water forms a sort of skin. This allows very small insects like pond skaters to live on the surface of water without sinking. When most materials go from liquid to solid, the molecules become more tightly packed, so solids tend to be more dense. With water, the hydrogen bonds cause solid water to form in a crystalline structure, with molecules that are relatively far apart. This means that ice is less dense than cold water and, as a result, ice floats. When temperatures are below freezing point, the ice which forms in a body of water floats and creates a layer at the top, insulating the water below. The area below the ice stays liquid, and so the fish and other organisms are able to survive, even in freezing conditions. To recap, the polar nature of water gives it some important properties. It allows things to dissolve in it. It has a high specific heat capacity. It's got a high heat of vaporization. Water molecules are cohesive, meaning they can stick to each other. They are adhesive, meaning they can stick to other things. Water has a high surface tension, and because hydrogen bonds force solid water to form in a crystalline structure,
Ice is less dense than water and therefore it floats. Okay, so let's start with questions. Okay, so here they have shown us 7 biological molecules labeled from D to K. Okay, so let's go through the question and then we'll come back to the diagram here. Okay, so first they're saying this table contains statements about the biological molecules, and complete the table by selecting the biological molecule from the figure that matches each of the statements. Okay, then write the appropriate letter in the figure. Okay, and the first one has been done. You may use each letter once, more than once, or not at all. Okay, so first one they have done for us, they're saying an amino acid that is a major constituent of collagen. Okay, and they have marked it as letter J. So let's see that first. That's an amino acid with it. And looking at letter J, I think it's somewhere, yeah, here. So what do you think, how are they saying it is an amino acid? If you look at the bonds. Jibete, can you recall? It's got a carboxylic group. Yes. And Good. then a amine group. Good. So we have two functional groups. Yeah. Then, okay, it has a central carbon. Okay, central carbon will always have one hydrogen attached to it. So this will be there. Okay, ये हमेशा हर केस में होगा. ये जो है बेटा R group, it can be anything. Okay, it can be any hydrogen, it can be hydrocarbon, can be other molecule. Okay, so you have to look at this. Okay, so this is what is confirming it's an amino group, amino acid. Okay, let's try. What are they asking us next? A component of RNA. Component of RNA. So we have to look at the. Okay, so achha, we can exclude what you think is not there. So do you think this could be a component? No, that's a fact. Let's exclude these. Okay, so J is already done also. So component of RNA. G beta. It's not D. It's component of RNA. The RNA has a pentose sugar beta. It has a phosphate group and it has a nitrogenous base. ये तीन चीजें मिलती हैं, ठीक है? So look carefully. Can you scroll on lower? जी बेटे? क्या कह रहे हो? Can you scroll a little lower? Okay, wait. नीचे थोड़ा scroll कर दें. To the question or the diagram? No, the diagram. It's a component of I wanted to see RNA the other and options. अच्छा, see. Option F and K तो ये है ना, तो that we excluded. Other than that, we have ENH, we have EH and DNG. It's G, I think. Okay. So ठीक है, if you are saying it's a pentose sugar, so we can count the number of carbons. So it's 1, 2, 3, 4, and 5. ठीक है, we have a phosphate group and we have a nitrogenous base. ठीक है, so it should be G. ठीक है, still let's look at the marking की, ताकि we are perfectly clear कि हम लोग सही काम कर रहे हैं. ठीक है, so it is G. ठीक है, so good. Okay, let's look at the next one. Now they're saying a molecule that is polymerized to form glycogen. It's D. Is D. So D First is for that's for glucose. Okay, let's look at the diagram and then I look in the marking key. So glycogen, and then but again another way of looking at it is see look at carbon number 1 or hydroxyl group is below that. Okay, so it's alpha glucose and it's D. ठीक है, क्योंकि बीटा ग्लूकोज सिर्फ सेल्यूलोज के केस में था, बाकी सब में अल्फा ग्लूकोज था. Okay, let's see the next one. A molecule with a peptide bond. Peptide bond. So, जी बेटे. Peptide bond.
It's H. Okay, so you're saying because of this, Yes. it's a It's peptide in bond. middle. Okay, let's look at the answer key also. So it's H. Good. Okay. Sorry. So it's H. An important store of energy, insoluble in water. Insoluble in water. जी बेटे. Because the rest of them you have done, take it D, G, and H, and now we are talking about it is insoluble in water, but it's a high, like contains very much a large amount of energy. जी बेटे. So what do you think? You scroll. It's K. It doesn't have double bonds. It's K. It's insoluble. Okay, so this molecule is of like what do you think? It's a molecule of? It's We a have glycerol. triglyceride. We have glycerol. We have 3 fatty acid chains. It's a triglyceride. Triglyceride, right? Okay, so you're saying K, and it is good. Acha. Next up, a molecule with a hydrophilic and hydrophobic regions. Hydrophilic and hydrophobic. Okay, so these were the initial options. Okay, so we don't see anything here. So, जी बेटे, hydrophilic and hydrophobic. It's F. Acha. And why are you saying बेटे F? You can see the. Well, it's kind of obvious because the last two options that are left. So it's just narrowing it down. It's obviously F. ठीक है, but still think about it. See, बेटा जब हम हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, so look at the phosphate group here. ठीक है, क्योंकि आपके पास ये पूरा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. ठीक है, ग्लिसरॉल has 3 carbons और 2 carbons. Positive, negative signs also. बिल्कुल. So 2 fatty acid chain जो है, ये part हाइड्रोफोबिक होगा. ठीक है, और because of this, क्योंकि phosphate ग्रुप भी बेटा अगर वो negatively charged है, ठीक है, so this will actually like become hydrophilic. So ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक है. So it has to be F. Okay, then an amino acid that forms disulfide bonds in proteins. So disulfide, you will be looking at sulfur bonds. This is at E. ठीक है, so यहाँ पे जहाँ पे सल्फर है, ठीक है, amino acids, और generally बेटा जो example आपकी book में भी बेटा there is cysteine. ठीक है, if there is another cysteine molecule, it will make a disulfide bond with it. Okay, so that's E, and let's look at the answer key, and okay, for 6 marks. So good. Question 1. Okay, let's look at the next one. Okay, so now they're saying describe 2 ways in which the structure of DNA differs from the structure of collagen. So like, do you want to like, because of the structure of DNA we'll talk about in chapter number 6. Or so do you want to do it or skip it, or we move to other question बेटे? We can skip it, I guess. हाँ, क्योंकि जब वो कर लेंगे तो then we can come to this question. Okay, let's see this. The figure shows you a structure of a deoxyribose sugar, and they're saying state the differences between the structure of deoxyribose and the ring structure of alpha glucose. So again, but just structure of deoxyribose sugar, so that you will do in chapter number 6 जब हम DNA discuss करेंगे. But still, if you want to give it a try, या alpha glucose की कोई चीज हमारे ध्यान में हो that you're not seeing here. It's missing an extra carbon chain. It has 5 carbon. ठीक है, so that's one. Atoms. ठीक है, clearly they're saying. And OH, the HOH group is on the opposite direction. ठीक है, सही, good. ठीक है, so alpha glucose का आपने बता दिया, सही है. ठीक है then, ठीक है, क्योंकि अब DNA का जब करोगे तो deoxyribose, but deoxyribose just अभी मैं बता देती हूँ for उसमें next class में helpful हो जाएगा. Deoxyribose बेटा is actually a 5 carbon sugar, ठीक है, और basically what is happening, उसके carbon number 2 पे बेटे, this is carbon number 2, क्योंकि carbon की numbering आपको वैसी करनी है, it's 1 2 3 4, ठीक है, और this is carbon number 5. So at carbon number 2 बेटे, deoxyribose में there is no oxygen there.
ठीक है. इफ यू कन्वर्ट लाइक उसको जब हम इससे कंपेयर करते हैं आरएनए से, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फाउंड इन डीएनए. आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है. राइबोज शुगर में देयर इज ऑक्सीजन अटैच्ड है. ये डिफरेंस है. और अगेन डीऑक्सीराइबोज को बेटा याद करने का एक तरीका ये भी, जब हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, सो यू हैव टू लुक एट कार्बन नंबर 2. ठीक है. सो देयर इज नो ऑक्सीजन एंड देन इट इज अ 5 कार्बन शुगर देयर. ठीक है. सो दैट्स ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, सॉरी 3 मार्क्स का है. ठीक है. सो अगेन जब वो वाला चैप्टर कर लोगे तो आई थिंक कंपैरिजन विल बी मोर इजी. सो दे हैव एक्चुअली गिवन यू दीज पॉइंट्स देयर. ठीक है. कोलेजन तो हमने स्किप कर दिया था. दिस वन बेटा, नंबर ऑफ कार्बन्स. ठीक है. सो बिकॉज डिस्क्राइब करना तो यू विल बी राइटिंग फॉर बोथ ऑफ देम बेटा. सो इफ यू आर राइटिंग अबाउट अल्फा ग्लूकोज यू विल गिव द लाइक उसी का पॉइंट दोगे फॉर deoxyribose. ठीक है. Number of oxygens, hydrogens. Then you just talked about the H and OH as the other way around in carbon 1. ठीक है. Okay, let's try the next one. Match the biological macromolecule with the type of bond that is formed when molecule is synthesized. Okay then, beta. So beta 1,4 glycosidic bonds. Options भी आपको given है. So which one of these will be having beta 1,4 glycosidic bonds? Amylose or amylopectin? It was like a carbohydrate. So think again. Cells. क्योंकि एक ही जिसमें exceptional case था Cellulose. cellulose. हाँ, beta chain से वहीं पर है. Beta 1,4 glycosidic bond. Okay, then बेटे alpha 1,4 glycosidic and alpha 1,6 glycosidic. Amylopectin. Amylopectin. ठीक है. And that's the only example that we have. So definitely बेटे amylopectin. Okay, phosphodiester bonds. It's a diester. It's a phosphodiester. हाँ, ये भी एक्चुअली लाइक आई थिंक ज्यादा आपको आसानी होगी जब हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे. ये हम जब आरएनए की या डीएनए की वो स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तब हम वहां पे पढ़ते हैं. ठीक है. सो अगेन आई थिंक ज्यादा क्लियर वहां पर आपको हो जाएगा जब चैप्टर 6 हम करेंगे. सो इट्स अ बॉन्ड बिटवीन बेटा फॉस्फेट. ठीक है. और जो एक दूसरा कार्बन होता है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जब बॉन्डिंग बनती है तो इट्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. सो इट्स फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. तो ये आई थिंक ज्यादा क्लियर आपको उसी चैप्टर के अंदर हो जाएगा. Peptide. Protein. ठीक है. The only option we have is protein. Okay. अच्छा. अब now they're saying cellulose is a polysaccharide and it shows you 3 subunits from a molecule of cellulose. Name the subunit molecule of cellulose. किस चीज से बना है ये? It's the beta glucose molecule. Beta glucose. ठीक है. And let's see if they're asking us for, so good, beta glucose. Then they're saying name the bonds that attach the subunit molecules together within a cellulose. Glycosidic bonds. But specify करो बेटे कौन से glycosidic bonds से? It's a beta glucose. 1,4. Good. Beta 1,4 or glycosidic bonds. अच्छा. Then they're saying cellulose has high mechanical strength. Which makes it suitable for the cell walls of the plants. Explain how cellulose has such a great mechanical strength, making it suitable for the cell walls of the plant. So, can you recall anything bit about the bonds? Since they're beta glucose bonds, the bonds that form one of the glucose molecules must be rotated 180 degrees upside down. Okay. So the arrangement results in a very strong molecule because there are many hydrogen bonds. There are many types of bonds, hydrogen bonds. So when they're running parallel to each other, they make hydrogen bonds also. So it makes it stronger. So ask guy, let's see. Yes. So many hydrogen bonds within the molecules, and you will talk about the idea of parallel chains. And take it for 2 marks. So held together by more hydrogen bonds to form fibers. Take us any of these 4, but maximum 2 marks are there. So good. Okay. Now they're saying a student was carrying out tests to determine which biological molecules are present in a food sample.
So describe a test. ठीक है, describe का मतलब होता है बेटा simply बताना, इसमें explanation नहीं आती है. ठीक है, so 2 marks. So describe a test the student could carry out to discover whether the sample contained a lipid. So lipid test का अगर नाम ध्यान में आ रहा है, emulsion test. ठीक है, और कुछ अगर हम फूड सैंपल्स की बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट के कौन सा फूड सैंपल हम यूज कर सकते हैं उसमें. ठीक है, 2 मार्क्स है ये. ठीक है, डिस्क्राइब करके एक शॉर्ट उसका एक शॉर्ट बेसिकली बेटर ये है कि बेटा आप बताओ कि कौन सा सॉल्वेंट है. ठीक है, यू विल हैव द जो भी आपके पास फूड सोर्स होगी. ठीक है, तो यू नीड टू टेल बेटे कि उसके साथ आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो. ठीक है, सो इट कैन बी इथेनॉल. ठीक है, ऐड या मिक्स विद अल्कोहल और इथेनॉल और प्रोपेनॉल. ठीक है, इथेनॉल और अल्कोहल यू कैन यूज. ठीक है, और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड देन एड इट टू वाटर. ठीक है, और इमल्जन में या लिपिड का जो टेस्ट होता है बेटा वी नेवर हीट इट, सो मेक श्योर यू डू नॉट यूज इट. उसको आर लिख दिया उन्होंने साथ, इट मींस इट विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, सो इट इज नॉट हीटेड. एंड देन उसके बाद के उसके रिएक्शन आपका बेसिकली, सो 2 मार्क्स में दिस इज इनफ. एक आपने रिएजेंट का नाम बता दिया, यू आर मिक्सिंग इट विद वाटर. ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स है. They simply said describe a test. Okay, now they're saying state what would be seen if the lipid is present. अब उसका पॉजिटिव कैसे white precipitate. ठीक है, ठीक है, सो इट्स वाइट इमल्जन है बेटा. इमल्जन या मिल्की प्रेसिपिटेट नहीं यूज करना. प्रेसिपिटेट का तो होता है वो छोटे छोटे उसके लाइक लाइक ऐसा लगता है कि किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा वो इस तरह करके लम्प्स बने हुए होते हैं. ठीक है, प्रेसिपिटेट इज दैट. इट विल बी इमल्जन या मिल्की कलर. वो कलर उसका कुछ सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाएगा, क्लाउडी सोल्यूशन बन जाता है. ठीक है, बट वो प्रेसिपिटेट्स नहीं होते उसमें. ठीक है, तो दे क्लियरली से कि रिजेक्ट दिस. ठीक है, तो इसका ख्याल करना बेटा पे चीजों पेपर के अंदर. अच्छा, नेक्स्ट दे आर सेइंग डिस्क्राइब हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड differs from a triglyceride. And 3 marks, they say you may use the space below for a diagram to help your answer. So any idea बेटे? और या मैं diagram ऊपर वाली दिखा देती जो first question में थी. How the structure of phospholipid differs from triglyceride. So this ये आपके question 1 में they had given us a diagram. So उससे देखे आप relate करो. जी बेटे, F और K. K is a triglyceride, F is a phospholipid. The difference in structure. तो उसको कैसे explain करोगे? It's got a hydrophilic head and a hydrophobic tail. So look at the glycerols के carbon atoms में कितनी fatty acid connected है phospholipid में. Then look at triglyceride. 2 chains. ठीक है, 2 fatty acid chains है phospholipid में. इसमें 3 है. इसके carbon number 1 में there is a phosphate group attached to it. ठीक है, let's look at the answer key. So phospholipids have 1 less fatty acid. So yes, ठीक है, आपने लिख दिया जैसे 2 fatty acids, right? 1 less. अब अगर fatty acid कम है तो बेटा एक ester bond भी कम होगा. ठीक है, because when we look at the diagram तो जो glycerol के साथ जो fatty acid chains बेटे जब उनका bond बना it's a ester bond. So अगर एक fatty acid नहीं है तो 1 ester bond is also not there. ठीक है, then you are talking about कि acid has this phosphate and you use the term also कि hydrophilic और hydrophobic. So maximum इन्होंने काफी points दिए, maximum you have to talk about 3. ठीक है, you use the term 2 fatty acids. ठीक है, आपने phosphate की भी बात की और आपने ये term भी use की है hydrophilic. Okay, let's go to the next one now. Okay, describe a test that a student could carry out to discover whether the food sample contained protein. So 1 mark है बेटा. इसका नाम टेस्ट का याद है आपको? Food test for protein. But they're saying describe it also. So you have to talk about the reagent. It's the pure test, but I don't remember the test. I know it turns into it's a biuret test. Biuret, ठीक है, remember use term करोगे reagent के बारे में. They are saying describe a test. ठीक है,
तो आप उसके अंदर बात बताओगे कि देयर इज अ कि बेसिकली उसमें होती क्या चीज है. सो देयर इज अ बायोरेट रिएजेंट, ठीक है, एंड देन वी आर एडिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो अब ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. either use this or simply use the term biuret reagent. 1 मार्क का क्वेश्चन है ये खाली, ठीक है. सो बायोरेट टेस्ट नहीं बोलोगे बिकॉज इसे डिस्क्राइब अ टेस्ट, ठीक है. तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नेम अ टेस्ट. सो डिस्क्राइब अ टेस्ट में मेक श्योर बेटा यू राइट डाउन द नेम ऑफ द रिएजेंट. सो ईदर दैट जो रिएजेंट है बेटा उसका नाम बायोरेट रिएजेंट है, उसके अलावा दूसरा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है. इन दोनों से भी वो बन जाता है. सो ईदर ऑफ दीज बेटा, ठीक है. जस्ट द नेम इज इनफ because they describe a test, name नहीं बोला उन्होंने. Then they're saying state what would be seen if protein was present. Purple. ठीक है, purple या lilac color होगा उसका. Okay. अच्छा, now this question is about the properties of water. So they're saying ponds provide a very stable environment for aquatic organisms. 3 properties of water that contribute to this stability are as follows. So they're talking about the density. It decreases as the temperature falls below 4 degrees Celsius. So ice floats on top of pond. It acts as a solvent for ions such as nitrates. ठीक है. So this is also important. Think about कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं aquatic organisms की. So they can be plants also. Nitrates का जिक्र किया हुआ है. A large quantity of energy is required to raise the temperature of water by 1 degree Celsius. Explain how these 3 properties help organisms survive in the pond. Again, they're saying in your answer, make clear links between the behavior of water molecules and the survival of organisms. This whole question is of 8 marks. So can you think of properties of water, और हमें इन 3 properties को relate करना है, ठीक है. So density की जब हमने बात की थी, we were talking about ice also. So think on those lines. How का aquatic environment कैसे survive करेगी. If the water turns into an ice, so it's less dense. Ice is less dense, ठीक है. So अब अगर ice so surface the organisms can survive. How will they survive अगर ice surface पे है बेटा, उसकी density कम है. Because surface पे it's like ice, but underneath it's liquid water. It's water. So it means ice is actually acting as a barrier, insulate करेगी, ठीक है. Okay, ठीक है. What else बेटे? अब यहाँ पे इन्होंने nitrates का भी जिक्र किया हुआ है. It is acting as a solvent for nitrates. Water is easy. It's easy to react. It's a really good solvent for chemicals. They get attracted to the ions of like the nitrates. So ठीक है. देखो जब जब आप बात कर रहे हो ना उसकी nitrates की, तो what else you can write there about आप, ठीक है, क्योंकि फिर हम उसके न्यूट्रिएंट्स की भी बात कर सकते हैं ना, कि अगर लाइक वहां पे आपको नाइट्रोजन नाइट्रेट्स है बेटा, अगर वो ब्रेक डाउन हो रहा है सॉल्वेंट की वजह से, ठीक है. सो वहां पे क्योंकि जो नाइट्रोजन है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड देन नाइट्रेट्स आर देयर, ठीक है. सो दे कैन बी देन यूज्ड फॉर अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है. सो दीज ऑल कैन बी देयर, ठीक है. उसके अलावा लास्ट उन्होंने एक प्रॉपर्टी उसकी बताई भी है, large quantity of energy is required to raise the temperature of water by 1 degree Celsius. So यहाँ पे आप वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जिक्र करो. The bonds will get broken if the temperature is raised by 1 degree Celsius. The energy required to break it is high. Like the energy required for it to break is high. So you can because of the hydrogen bonds. Specify करो specific heat capacity को, ठीक है. अच्छा, so what they have done here बेटा, उन्होंने तीनों को ना अलग अलग आंसर्स दिए. फर्स्ट वाला जो आपको प्रॉपर्टी दी थी आइस फ्लोट्स की, ठीक है. अभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है. सो यू कैन डेफिनेटली बेटा राइट, अगर 3 पॉइंट्स भी तुम हर एक में से लिख रहे हो. तो सी आपने बात की थी आइस इज लेस डेंस, मॉलिक्यूल्स विल स्प्रेड आउट.
So you can talk about it, there will be a crystalline structure, ice forms an insulating layer, ठीक है, and acts as a barrier. तो अगर आप लिखते हो कि it acts as an insulating layer तो फिर उसको specify करो आगे, ठीक है, कि how will it act as an insulating layer, ठीक है. So उसकी example, it acts as a barrier to cold. Then water below ice does not freeze, still remains a liquid, ठीक है. So ये काफी सारे points ice के तो हमने clear कर लिए थे. And for the same reason, the organism definitely will not float, will not freeze basically, ठीक है. अच्छा, अब in this question actually they use the term it provides a stable environment, ठीक है, and we were talking about how organisms are surviving, ठीक है. देखो question था, in your answer you should clearly make links between behavior of water molecules and survival of organisms. तो आंसर में, ठीक है, कहीं भी आप ये मेंशन नहीं करोगे कि organisms will die, ठीक है, क्योंकि अभी सर्वाइवल की बात हो रही है, ठीक है. सो देयर saying के do not accept die, ठीक है, because survival is stated in the stem. So organism will not freeze, आप ये term लिखोगे अगर लिख रहे हो, it will, they will not freeze, but आप ये नहीं लिखोगे कि they will not die, ठीक है. So they can still move, and so a lot of it you can have already told. Okay, then बेटा we use के water is acts as a solvent, ठीक है. तो solvent की जब हम बात करें तो आप वहाँ पे ये वाला जिक्र करोगे कि it has polar ends, ठीक है, charged particles, they can attracted, और ये बात अभी जिक्र किया था नाइट्रेट आयंस का, ठीक है. So they can actually be, they are attracted to or they bind or interact with water, ठीक है. Then you can use, अब क्योंकि नाइट्रेट्स का जिक्र किया हुआ था तो वहां पे then you can use के they can actually use the mineral, ठीक है, as a nutrient there, ठीक है. और for mineral they have actually given these statements, ठीक है. अगर स्पेसिफाई करें तो the nutrients will be used for growth, metabolism, ठीक है बेटे. और टेम्परेचर के लिए जो उन्होंने पॉइंट्स दिए, दीज आर द पॉइंट बेटे, ठीक है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, एंड देन, और अगेन बेटे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स या तो आप यूज करोगे मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स या स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू फोर्स दीज मॉलिक्यूल्स अपार्ट और ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है. एंड मेक श्योर बेटा अगर आप कर रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरा टर्म यूज करना, ठीक है. अच्छा, दे आर सेइंग डू नॉट क्रेडिट लेटेंट हीट कैपेसिटी. एनी आइडिया बेटा व्हाई दे आर सेइंग लेटेंट हीट कैपेसिटी ना यूज करो? फर्क क्या है स्पेसिफिक और लेटेंट के अंदर? I don't remember. लेटेंट वाली वो है बेटा जब वो उसमें फर्दर वेपराइज हो रहा है, ठीक है. अच्छा, देन टेम्परेचर्स डू नॉट चेंज मच, स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर, ठीक है. अब 8 मार्क का है तो ठीक है, तो मेक श्योर कि 3 पॉइंट्स डेफिनेटली बेटा हर एक के अंदर से जाए. देन हियर दे हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा इट कैन हैव एन इफेक्ट ऑन एंजाइम और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, गैसेस रिमेन सॉल्युबल, ठीक है. तो आई सेंड यू द आंसर की आल्सो, बट इससे बेटा रिलेट कर लेना अपने उसको. Okay, let's look at the next one. Achha, they are saying water is important in many biological reactions. Complete the table below by writing an appropriate term next to each description. The type of reaction that occurs when water is added to break a bond in the molecule. Hydrolysis. Hydrolysis, good. The phosphate group of a phospholipid that readily attracts water molecules. Hydrophilic. Hydrophilic, good. Okay, so let's look at the, okay, so hydrolysis and hydrophilic. Okay, now a student followed a procedure to find the concentration of reducing sugars in a fruit juice. The first part of the method used was as follows. So the student used a range of glucose solutions of different concentrations, starting with 20 grams per decimeter cube. Then each solution was boiled with excess Benedict solution. When there was no further change in color, the liquid was cooled and filtered. The absorbance of liquid was measured with a colorimeter. A colorimeter measures the amount of light that is absorbed by a colored solution. Okay, so they have shown you a graph. So this is a glucose concentration as it is increasing. Okay, and this is the absorbance. Okay, so first they are saying state 2 precautions that the student should have taken during the procedure to ensure that the results have a valid, give a valid comparison between different glucose solutions. 2 marks or 2 safety precautions. So you can go through this again, and what do you think? Kya safety precautions ho sakte the uske?
इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो कुछ कंट्रोल रखेगा चीजें, कुछ concentrations should be evenly should increase incrementally, not like in any random pattern. ठीक है. Can you show me the question again exactly? This is the question. अच्छा, like नीचे Question. जी बेटा. 2 precautions I should have taken. That and can you go back up? And each solution is powered with excess. Can you correct the question? Can you show me the graph? I'm not sure about the second one. अच्छा, think in terms of जो बेनेडिक्ट टेस्ट हम करते हैं बेटे, so we make sure कि जितना हम वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन का ले रहे हैं, we have the same volume of बेनेडिक्ट reagent also. ठीक है. तो सेफ्टी प्रिकॉशन में तो एक्चुअली हम यही कर रहे हैं ना कि हम किस तरह की चीजों को बेसिकली एक्सपेरिमेंट का कंडक्ट करना है. सो लेट्स सी यहाँ पे इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है आंसर. ठीक है. सो यूज द सेम वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड द सेम वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ठीक है. बिकॉज दिस इज अ रूल फॉर बेनेडिक्स. जब हम ये बार बेनेडिक्स टेस्ट करते हैं बेटे, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए. ठीक है. देन यू क्लियरली सेड कि यस सेम कंसंट्रेशन. बच्चे ने यहाँ पे डिफरेंट कंसंट्रेशन यूज की है. ठीक है, ग्लूकोज की. बट बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जब आप यूज करो तो मेक श्योर उसकी कंसंट्रेशन सेम. देन टाइमिंग का ख्याल करना है. बॉयल फॉर सेम लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है. और कैलिब्रेट द कैलोरीमीटर. 2 मार्क्स का था, तो अ लॉट ऑफ इट बेटे यू कैन राइट फ्रॉम. ठीक है बेटे. Okay, next is in the second part of the method, the student tested the fruit juice. Absorbance reading obtained was 0.60 arbitrary units. Use the diagram to above to determine the reducing sugar concentration of the fruit juice. ठीक है. So these are the arbitrary units. और इसके through हमें concentration देखनी है reducing sugar की. So you have to look at the graph बेटे. So these are your arbitrary units, 0.6. So you simply will have to like draw a line and then drop it down. This will give you the glucose concentration. What do you think it is? 6.5 decimeter. 6.5. ठीक है. तो अब इसमें accurate answer ही चाहिए होगा. 6.5. Okay. Achha, then they're saying the procedure does not test for non-reducing sugars such as sucrose. How should the procedure be altered to determine the concentration of non-reducing sugar in the fruit juice? I don't know. I don't know. अच्छा रुको, मैं इसका आपको बताती हूँ. रुको जरा. अच्छा बेटा, अब थिंग विद सुक्रोज. ठीक है. सुक्रोज को हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर. सो अब रीजन क्या बेटा, हाउ वुड विल नो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इट विल स्टे ब्लू. ठीक है. उसका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग शुगर होते बेटा चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू ऑरेंज टू ब्रिक रेड. ठीक है. सो फर्स्ट रीजन क्या था सुक्रोज का? दे डू नॉट हैव दीस फ्री कार्बोनाइल ग्रुप्स. एल्डिहाइड्स या कीटोन्स उसमें नहीं थे. ठीक है. सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है. So what do we do is Benedict solution itself जो बेटा जो है ना, it is actually copper sulfate which is dissolved in an alkaline solution, जो actual आपका Benedict reagent है. ठीक है. So it is copper sulfate in an alkaline solution. ठीक है. So reducing sugars तो बेटा उस blue color को convert कर देते हैं. ठीक है, into a brown और red color. Non reducing का issue क्या होता है बेटा? Non reducing के लिए आपको उस solution को first बेटा acidic करना पड़ेगा. So sucrose, ठीक है, it has to be hydrolyzed through boiling with acid first. ठीक है. Remember जो आपका Benedict's reagent है, it is copper sulfate in alkaline solution. So sucrose के लिए अगर we are suspecting non-reducing, the sucrose is first hydrolyzed through boiling with an acid
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, अगर आप एसिड यूज करें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा सोल्यूशन। तो सुक्रोज के जो बेटे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है दे विल बी ब्रोकन, और अब सुक्रोज में जो आपके जो वो कार्बोनाइल ग्रुप्स है ना, दे विल बी एक्सपोज नाउ, बिकॉज जो रिड्यूसिंग पावर है बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप्स, इट इज बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स अटैच्ड हैं या कीटोन्स अटैच्ड हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट इज द रिड्यूसिंग पावर। सुक्रोज के अंदर बेटा वो एक्सपोज नहीं होता। तो जब हम सुक्रोज को बॉयल करें एसिड के साथ, तो व्हाट विल हैपन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं बेटा, दे विल बी एक्सपोज्ड, ठीक है, दे आर नॉट फ्री देयर, क्योंकि उनसे बाकी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, वो अब एक्सपोज हो जाएंगे। जब वो एक्सपोज हो जाएंगे बेटा, देन सेकंड स्टेप में यू कैन एक्चुअली देन बेटा अब उसको फिर हम बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा के देन वी कैन हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। बट इट इज डन फर्स्ट, उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ बेटा उसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस के बाद हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सुक्रोज के लिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए। और बेटे, और रिड्यूसिंग शुगर्स तो डायरेक्टली आप बॉयल करेंगे एंड इट विल गिव यू रिजल्ट, और नॉन रिड्यूसिंग के अंदर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है फॉर सुक्रोज, ठीक है बेटे। Let's confirm from the answer key also. ठीक है, so hydrolyze, ठीक है, make sure hydrolyze with acid, ठीक है, आप टर्म यूज कर सकते हो कि yes neutralize, ठीक है। उसके बाद another step can be done बेटा, sucrase is an enzyme, जो sucrase है बेटा इसको break down करेगा, तो 2 marks का, तो you can write either of these points, ठीक है। so either you will use hydrolyze with an acid or neutralize it, or you may write treat the same sucrose with sucrase, ठीक है। तो जो सुक्रेज होगा बेटा वो भी उसको डेफिनेटली इसके एंजाइम में बेटे कैटलाइज कर देगा, एंड देन यू आर गोइंग टू बेटा बॉयल विद बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, एंड देन बेटा यू विल सी द कलर, ठीक है बेटा, फॉर 2 marks. So this is how we will write it. Okay, let's look at what's left now. अच्छा, amino acids are the basic building blocks for proteins, and figure shows you an amino acid cysteine. Okay, so you can see the sulfur here also. Okay, so they are saying complete the table by selecting the letters J, K, L or M that represents the following groups in cysteine. So carboxyl group it is. Which is the carboxyl group? Complete the table by selecting J, K, L, M that represents following groups in cysteine. The carboxyl group is L. Oh, the carbox. Hello. जी बेटे बोलो. जी you there? The carboxyl group is COOH. बिल्कुल, COOH is N. Carboxyl is N. अच्छा, then they are saying R group. What do you think would be the R group? M. M. Yeah. Okay, ठीक है. And then amine group. NH2. J. Okay, so let's see. So it's L and M and J. Good. Okay, so primary structure of protein consists of chain of amino acids. Describe how a second amino acid would bond to cysteine in forming the primary structure of a protein. And this question is of 3 marks. Back to the question. It says the primary structure consists of a chain of amino acids. So this chain is already made. You can describe how a second amino acid would bond to cysteine. Cysteine is one molecule. Okay? In forming the primary structure of a protein. The primary structure banega kaise? This is what we have to talk about. Okay? एक molecule तुम्हारे पास already है cysteine का, which they have shown you here. अब अगर एक और cysteine का same molecule है बेटे, तो उसमें bonding कैसी होगी? Okay, you have the same bond. यही कार्बन है बेटे, इसके साथ ऊपर यही CH2 और SH है, ठीक है. एक साइड पे इसके अंदर भी बेटा we will have this amine group attached, और दूसरी साइड we will have carboxyl group. So अब यहाँ पे bonding किस तरह होगी बेटे? F2 cysteine molecule. It will form a peptide bond. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास देखो, ये एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलेट, दूसरी जगह अमीन है, ठीक है. सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH,
और जो आपका अमाइनो ग्रुप है बेटा उससे H. These two form water molecule. और जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा From a dipeptide bond. हाँ अभी नहीं, ये तो डाइपेप्टाइड, ये तो वन पेप्टाइड बॉन्ड बना है ना. डाइपेप्टाइड का मतलब तो 2 होंगे. अभी हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं. अभी सिर्फ एक लिंकेज बन रहा है इनके बीच में. तो इट विल बी कार्बन. ठीक है, इट विल हैव दिस डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन. ये ऑलरेडी था, मगर ये कार्बन एक्चुअली बेटा नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, तो जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो कार्बन विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हैड दिस हाइड्रोजन. तो ये पूरा जो है बेटा ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है. तो आपको ये प्रोसेस बताना है. ठीक है, रीड द क्वेश्चन वन मोर टाइम, फिर समझो उसको. They said describe how a second amino acid would bond to cysteine. Cysteine is only one molecule. ठीक है, in forming the primary structure of a protein. Primary structure में we only talk about peptide bonds. ठीक है, secondary structure में फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं. ठीक है, अब टर्शियरी में आगे डाइसल्फाइड्स और वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स आ जाते हैं. समझ आई बेटा? 3 नंबर का सवाल है आपका, आपको इस तरह एक्सप्लेन करना है उसको. Okay. Then they are saying each amino acid is a different R group. Describe how these R groups can interact to determine the tertiary structure of a protein. अब ये 4 marks है बेटे. So think about R groups. उनमें आपस में किस तरह के bonds बनते हैं. तो now you can talk about the bonds now. Tertiary structure है ये. I don't know how to make the connection between the tertiary structure and the R group. ठीक है, चलो let's see. ठीक है, अब R groups, ठीक है, some of the R groups बेटे, some of them attract, some of them repel also. So because of that बेटा ये कुछ हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक. तो जनरली जो बाहर वाले R groups होते हैं ना बेटा वो हाइड्रोफिलिक बनाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा दे आर सॉल्युबल. ठीक है, तो बाहर वाले हाइड्रोफिलिक होंगे और अंदर हाइड्रोफोबिक होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है आपका. ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो अंदर हीम ग्रुप होता है वो अंदर सेंटर में होता है. ठीक है, देन यू कैन राइट अबाउट द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो नाउ बेटा यू राइट अबाउट दीज बॉन्ड्स. So disulfide bonds are formed between the cysteine molecules. ठीक है, talk about the hydrogen bonds. ठीक है, तो tertiary structure में सारे bonds होंगे. Peptide structure तो definitely बेटा peptide bond will be there, वो primary structure है. ठीक है, but hydrogen bonds, disulfide bonds, then because आप exclusively R groups की बात कर रहे हैं, so you can talk about कि some R groups attract. ठीक है, तो कुछ हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक बनते हैं. ठीक है, देन आयोनिक बॉन्ड्स आल्सो फॉर्म बेटे, क्योंकि अगेन वहां पे आपके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ग्रुप्स के बीच में आयोनिक बॉन्ड्स ही बन जाते हैं. ठीक है, देन हाइड्रोफिलिक बेटे आर ऑन द आउटसाइड व्हिच आर इन कांटेक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स बेटे दे आर इनसाइड. ठीक है, तो 4 मार्क्स में दिस इज व्हाट यू कैन राइट. ठीक है बेटे. Okay, let's see what's next. Achha, so they are saying the statements in the table below refer to 3 polysaccharide molecules. If the statement is correct, place a tick in appropriate box, and the statement is correct, place a cross. So, जी बेटे, polymer of alpha glucose. अब बताओ. Alpha glucose, tick for starch, tick for glycogen, cross for cellulose. Okay. Glycosidic bonds present. Tick for all of them. Achha, ठीक है, all of them are carbohydrates. Unbranched chains only. Unbranched chains only. So not branched. Starch. अच्छा, starch बेटा we have amylose and amylopectin. Amylose unbranched है, amylopectin branched है. Then just cellulose. It's only cellulose. ठीक है, क्योंकि glycogen में भी you have alpha 1 and alpha 1 6. ठीक है. Energy stored in animal cells. Animal cells का energy. Solely glycogen. ठीक है. ठीक है, so let's tally from the answer key.
ठीक है, so clearly, ठीक है, so your answers are correct. ठीक है, and I think we have the last question now. Okay, so the figure shows a pond skater walking on the surface of water, and the other figure shows a northern pike. ठीक है, and they're showing both animals live in northern countries of the world where temperatures often drop below 0 degrees Celsius. Describe the importance of water as an environment for the pond skater and the northern pike. ठीक है, as an environment, 4 marks. So environment की बात कर रहे हैं बेटा, तो you can think in terms of habitat also. Since the बेटा 2 temperature marks. since the temperature drops below 0 degrees centigrade, the ice freezes, the water freezes into ice. Good. So it causes the molecules to bond together closely, which is why the pond skater can. हाँ नहीं नहीं अच्छा अभी अगर तुम आइस की बात कर रहे हो पहले, तो वहां पे पहले जिक्र करो आइस का कि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, टेक्सस इंसुलेटर. ठीक है, और बॉन्ड्स के बारे में अलग बात करें तो देन यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कि हाउ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस एक्चुअली दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड फॉर्म अ लेयर. तो दोनों के बारे में अलग अलग करके बात बताओगे. ये 2 मार्क्स है ना. Can you show the question again? अच्छा नहीं, For answer. अच्छा this is what it says. That's Describe the fine, importance of water as an environment. Okay. The pond skater, yes, the pond skater is able to can you go back up? It can walk on the surface of the water more easily since their hydrogen bonds are formed because of the low temperature of the low temperature, which causes surface tension का भी जिक्र कर सकते हैं. yeah, the surface tension to be high and the cohesion to be high. Good. So it allows small organisms to walk on it or settle on it, skate on it. Okay. And for the northern pike, the ice formation due to the low temperature being below 4 degrees centigrade, it causes the ice formation which is less dense than the liquid form. So therefore it's the organisms can easily I don't know. But ये reason बताओ ना कि अगर if ice is there at the surface, तो वो क्या कर रही है? Like how is it helping the organisms? I don't understand what the pike is doing. Is it on the ice or is it underneath? नहीं, it's under. ये तो water में है ना? इसका environment तो water है. Then it causes insulation for the water underneath the ice. आप ये बोलो कि it acts as a barrier. ठीक है? Okay, let's look at the answer key also. ठीक है, so दोनों के अलग-अलग हैं. Pond skater can stand on water or use surface for habitat. ठीक है, because of surface tension. ठीक है, तो surface tension का जिक्र करो, you can talk about hydrogen bonding. You use the term cohesion also. ठीक है? So clearly बेटा adhesion अगर use किया तो that has to be ignored. Then again बेटा क्योंकि हम basically यहाँ environment की बात कर रहे थे, ठीक है, तो environment के अंदर habitat भी आ सकता है. So you can refer to के अगर pond skater भी है बेटा तो उससे छोटे organisms they can also better then float there. ठीक है, so it can actually get its food also. ठीक है, what else is there? ठीक है, फिर solvent, ठीक है, dissolve oxygen. It is getting all the gases there. Then water has a high density in medium. ठीक है, फिर यहाँ पे उन्होंने साथ पाइप का भी जिक्र कर दिया है. And you talked about बेटे सारा ice or ice floating, ice की density की बात की है. ठीक है, तो I think it's more than enough. 4 marks है तो 2 marks for each definitely. ठीक है, हाँ आप ये भी टर्म यूज कर सकते हैं वहाँ पे हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली बात. And high latent heat of fusion. So latent heat of fusion है with water does not freeze easily. So this is another property of water. So they have given you 10 options बेटे, उसमें से you have to use 4. ठीक है बेटे?